नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा सचदेवा। एग्जाम्स शुरू हो गए हैं, जाहिर सी बात है प्रेशर भी शुरू हो गया है, चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें या फिर पेरेंट्स की बात करें। लेकिन ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू वी कनेक्ट एजुकेशन विद स्ट्रेस? क्यों ना कुछ मॉडर्न टेक्निक्स की बात की जाए, जॉयफुल लर्निंग की बात की जाए, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी। किस तरीके से हम जो एजुकेशन है उसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स के होते हुए। आजकल हम इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करते हैं, व्हेन यू हैव टू स्पेंड लॉट्स एंड लॉट्स फॉर दोस स्कूलिंग। क्या कुछ इसका आसान तरीका है? बिल्कुल है। करेंगे इन्हीं टेक्निक्स के बारे में, जॉयफुल लर्निंग के बारे में, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के बारे में अपने दूसरे सेगमेंट में। लेकिन पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं प्रवासी भारतीयों के बारे में। हर साल सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है, जिसके तहत उन इंडियंस जो बाहर इंटरनेशनली सेटल हो गए हैं उनको वापस बुलाया जाता है, जस्ट टू कम बैक इन इंडिया एंड लुक आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द नेशंस। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जो भारत में जन्मे पले बड़े, लेकिन फिर वो इंटरनेशनल जाते हैं, बट दे टेक केयर ऑफ देयर इंडिया एज देयर ओन मदरलैंड। ऐसे ही खास मेहमान है हमारे साथ। उन्हें आप एंटरप्रेन्योर कहो, उन्हें आप राइटर कहो, फिलैंथ्रोपिस्ट कहो, सिविक राइटर कहो, ही हैज लॉट्स मेनी फेदर्स इन हिज कैप। उन्होंने बहुत ढेरों काम किए हैं हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए। सो टू टॉक अबाउट हिज जर्नी, हिज अचीवमेंट्स, द चैलेंजेस ही फेस्ड, अबाउट हिज जर्नी, आइए जानते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है डॉक्टर फ्रैंक एफ.एस. इस्लाम। यू आर एफआई इन्वेस्टमेंट, थॉट लीडर, सिविक लीडर। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर इस्लाम आपका। Yes, thank you very much for your time. I am Frank Islam. So Frank Islam, when we talk about India, of course, I'm sure have a, it might be the center of your heart when we talk about your feelings, your connections with India. But your journey from Aligarh, Azamgarh, and then America would have been interesting one. Kindly share your words. And challenging one. Challenging as well. Well, I love India. I was born in India, and I love the India's arts, cultures, and rituals. India is a global beacon of hope and democracy and diversity of the world. And that's the things that I'm going to talk about it in my speech in about an hour about the U.S.-India relationship. To answer your questions, and you have a very interesting and thoughtful questions, and thank you for asking the questions. So I was born in Azamgarh, and I have never lost love of Azamgarh. What's best in me, I owe it to Azamgarh. Its leaders have shaped our history, and my parents taught me something that I always cherish, nourish, and nurture: love of education, a passion, a commitment to education. Absolutely. If I have not gotten the education, if they did not infuse in me the love of education, I have never crossed the Atlantic Ocean to realize the American dream, and I embody the American dream. So I went to Aligarh Muslim University, which is not, one of the professor, Wolfgang Throne, who was a professor at the University of Colorado in Boulder, came to Aligarh Muslim University as a visiting scholar, I believe, and he sort of told my parents that I want to take this kid to America. They said, take him. So here I am, 15 years old, left America, I left India, as a matter of fact, and without any parental guidance. But I always wanted to get a good education. So I got my bachelor's degree and master's degree from University of Colorado in Boulder. That gave me the real world grounding. But I wanted to be a business person. You talk about entrepreneur. I wanted to be a business owner and make a difference in people's lives. So, but I needed the experience. So after I got my degree, I came to Washington D.C. area, and I worked for 2 information technology companies to get the experience and the real world grounding. And then after that, I became an entrepreneur. In 1994, I bought a company for $45,000. I mortgaged my house, and if you ever talk to my wife, she will say, I'm not sure why you want to do this. And my wife is an American, and I love her very much. But I did. That was the best investment that I ever made. That $45,000 yielded to several $100 million. So within 13 years, my management team and I were able to grow that company for 1 employee, that's me, to 4,000 to employees and to $300 million in revenue. And then I sold the business in 2007 to Mr. Ross Perot. You probably heard of him. He ran for the President of the United States also against George H.W. Bush and President Clinton.
and that gave me the financial independence. Then my wife and I started the foundation, Frank Islam and Debbie Dreisman Foundation, which focuses on education, which you mentioned, arts and culture, and civic engagement and world peace. And you can ask me about education, but the thing which I want to highlight about the importance of the arts and arts. Art, as President Kennedy says, nourishes the roots of our culture. Art transcends our boundary, and art represents the best of our humanity. And I'm also very civically engaged. I have Frank Islam Civic Engagement Institute, and also involved in a conflict resolution. I have given a several $1 million to U.S. Institute of Peace to make sure that we have a world which is a conflict-free. We should not look at the God in heaven, God that we worship. We look at the family that we are on this earth. Absolutely. And that's the reason I'm also interfaith dialogue, which allows us to build the bridges of understanding and cooperation, and also brings people together. The democracy and diversity, those are the two values that binds us together as an American Indian, and diversity brings us together. Diversity makes us stronger. And when we're stronger and together, we can help shape a better future for India. Absolutely, we can change the world. So I would say from you very well said. We can change the world, absolutely. So you talk about from the world peace to education, to being an entrepreneur, to actually expanding and multiplying from being #1 to now thousands and thousands. So what made you coming back to India, to spend here in India, to get engaged more in India, because you were doing so well back then in America? Well, I would say that I would have not crossed this ocean if I were not born to India. I love this country very much, and I want to give back. So I'm reminded and guided by the words of President John F. Kennedy. And I quoted Kennedy when I talk about the arts and culture. I sit on the board of the trustees of Kennedy Centers of Performing Art, appointed by President Obama, who happens to be a good friend. So your question with regard to why I come back to India, and I come back every 2 years. I want to give back to this country because this country has been good to me. And I also want to give back in education, which is the most important part of it. So I came here about 3 years ago to inaugurate Frank and Debbie, my wife Debbie, Islam Management Complex at the Aligarh Muslim University. And that management complex have innovations and entrepreneurship center. And I hope we can create one day Silicon Valley between Aligarh and Delhi. Wouldn't that be nice? Absolutely. And we can create jobs, build employment, and make a difference. And especially the young people are the hope of tomorrow. The promise and potentials of, and possibilities of India and the world. So I did that, and I was a convocation speaker, and I gave the speech. And then after this year, I came to give another $500,000 to Aligarh Muslim University to build Frank and Debbie Islam auditorium at the School of Journalism, which is very important. That's you know, amazing. you're a journalist. And I believe, my wife and I believe in democracy, and also believe the freedom of press, which is, and they are the freedom of press, the cornerstone of the democracy of India, and for that matter, for the world. Unfortunately, I was not able to go there because of what happened at Aligarh Muslim University in terms of the unrest, and they were not able to secure me. So I will come back with my wife in October, and hopefully you'll interview her when she comes back to inaugurate the complex. Absolutely. On the topic of the freedom of press and the journalists, and you are a journalist, and you're a wonderful journalist, and thank you for all you do to make a difference, is we also sponsor through our foundation journalists that come from India to the United States. And we did that last year for Hindustan Times, and before that we did somebody from a DNA newspaper, which I think is in Gujarat. So, and the idea is that they get the Frank Islam and Debbie Dreisman, which is my wife's name, is the project, is the fellowship, so they can learn about America's character, conscious America's values, and promote their democratic values. Those are the values that binds us together from America and India. So that means the values are binding together, as you rightly said. And of course, during the course of your answer, one more point thing that attracted me was the job opportunities. We need to talk about job creating more and more opportunities. But before that, talk about your organization. What's the agenda? What's the purpose when we talk about the purpose? Because as before we started the program, you said that everybody has very limited time on this Mother Earth. So we have to get the maximum out of it. So when we talk about your organization, what's the agenda, the purpose of it, especially when we talk about the international, the global perspective, and especially about India? Well, when I sold my business in 2007, I had the financial independence and cash so that I wanted to deploy my own cash.
to establish Frank FI Investment Group, and the concept behind the FI Investment Group was to give money, seed money, the capital seed money, to the young business owners and entrepreneurs, so they can go out to create jobs and become another Frank Islam, which is what I want them to be, and embody the American dream or Indian dream. So. And that's the purpose of that. I invested several $1 million in India to start new businesses. Unfortunately, I did not do very well personally because of the year 2007. At that time, American if you look at the Wall Street, they probably took a toll on it. And that time, our economy was not doing very well. But now I do not invest as much. But what I do invest in education and invest in India and around the world. The four areas I mentioned: education, civic engagement, which is very important to be engaged civically, and also in the world peace and arts and culture. So I continue to invest in those areas, and that's important to me personally. We have to make a difference, and we need to be a difference maker, and that's the only way we can help shape a better future. And we have a short time in this planet Earth, as we mentioned to you, and we have to make a difference. So I think from your experience of the challenges you have faced, and you have learned so much, you're actually giving out to the generations to come. But talking about a visit to Delhi, you have been recently, I would say recently, but back in 2015, you visited with your dear friend Barack Obama during the Republic Day 2015. Just share your experiences. How was that trip? Well, I came, this was a wonderful experience, and flying with the President of the United States is a truly an honor and a privilege. And there's no traffic problems if you go on his car and all those things that they have. All the traffic is just stopped and so on and so forth. And so President Obama asked me to travel to India with him in order for us to celebrate India's Republic Day. That's President Obama, India's Republic Day, which was, and Prime Minister Modi was just a wonderful person. He embraced American president. The people of India embraced him, and I was privileged to be there. Then I also went to Rashtrapati Bhavan and had a dinner there. This is Prime Minister Modi also, so we met. So those are the good experience. But the thing which was attracted to me is how do we establish and promote the relationship in terms of the business relationship with India and the United States. And that's the topic of discussion that I have this evening when I give a speech on promoting U.S.-India relationship. It's close to $80 billion trade is. And by the year 2030, take my advice, we're going to have a $1 trillion U.S.-India trade relationship. And that's that would be phenomenal. And that's the Prime Minister, and that's Modi. So that was the purpose of that meeting was. Unfortunately, President Obama has to go. We had a dinner together the night before when he gave his speech next day. Then he has to fly to Saudi Arabia because King Abdullah passed away. But it was a great meeting. And the thing which attracted to me most is the love and affection of the Indian people to the President of the United States. Undoubtedly. And he's a great person. He's a great orator. He's a very eloquent speaker and all of the above. But Indian people embraced him, and this is the value the Indian diaspora bring to India. And India diaspora have the capability, the capacity, the responsibility to help India achieve its fullest potential, not only in investment but also in education and employment, as well as U.S.-India relationship. There are many sectors that they can help, which is what I do, which is what I want to do. Absolutely, from education to art and culture to all the sectors that you're rightly. You're absolutely, and healthcare is so very important. I think they all are connected. When you empower them, especially when we talk about the empowerment of mind and soul, I think once you're empowered mind and soul, you're empowered in the education sectors, then we can actually change the future for the generations to come. Well, I think you have selected a very interesting topic, education. So let me say a couple of things about education and our co-president Obama also. If I would have not received the educations, I would have not crossed the Atlantic Ocean to go to America. I would like to say that America's inclusiveness and openness that provided me the ladders of opportunity to succeed. Those are the strengths and the values and qualities of America all of us can proudly and truly embrace. And this is the values that we need to instill and infuse in this nation to become inclusive, tolerant, as well as
so we can build a fairer and stronger India. Education is the key ingredient of a success. Education empowers the mind and uplifts the soul. Education, President Obama, since you quoted, he said it will be the currency of the 21st century. Education is a bridge to the future, is an opportunity creator. And it also gives you the, in addition to that, it builds the bridge for you to climb the ladders of success. And I say to the young people who are listening to me, get a good education, do not drop out of the college, because we need you, the world needs you, and God needs you. Absolutely. So I've been so many entrepreneurs, so the young minds who might be listening to you, they do think that education is the basis. So now especially you've been Lord there when you back to Meghalaya as well, Varanasi and Meghalaya, you have some of the important projects here. You know, briefly just tell us about that as well. Okay, so I went to Meghalaya, and the governor has given me the Doctor of Science degree, which was which was a great accomplishment. And the fellow who founded the University of Science and Technology in Meghalaya, I may not have pronounced it correctly. It was a great moment in my life. I was delighted and I was honored to be there. And that fellow who founded the university about 10 years ago, I think, is from Aligarh Muslim University. So there was a bond that binded us together. He's an educationist, I'm an educationist. He went to Aligarh, I went to Aligarh, so we bonded together. And I saw this young man, fellow, and I don't think he could be more than 50 years old. He established this and have this university, and he has given. It was a great experience. And then I went to Varanasi, and from Varanasi to Azamgarh. Now, one of the things I want to talk about the Azamgarh that I did not mention, purpose of my trip, to establish a Frank and Debbie Islam health clinic in the village that I was born in, Azamgarh. It looks like America. It's such a beautiful, it's a very small though, but I want people to get a good, not only good education, but good health, because healthcare is in this country is for the privileged and the rich people, not for the poor people or the middle class. So I want them to get a good health and preventive health, and make sure that we can get a doctor over there who can take care of the people over there in the surrounding villages. And I also did one more thing, and that I'm very grateful to my mother. I established a girls' college. I do believe that education for the girls is a very, very important. This should not be confined to the four walls, especially the Indian Muslim girls. They should not be isolated. Their voices should not be ignored, and they have the capacity, I believe, to determine their own destiny if they go get good education. And there's more than 50% of the people in India are women. We need to exploit their fullest potential. Absolutely. So that they can achieve what they want to achieve. And they should look at Mrs. Gandhi, who was the Prime Minister, and they should look at the Pepsi Cola CEO Indira Nooyi, who's a personal friend, and many, many others who shaped India. And I want them to be one of them. Absolutely, you know, so from health, I would say, to education, every sector in which we are working in. So before we wrap up the discussion, you know, you're talking about the girls, especially I would say the youth of today. They shouldn't be confined to the four walls. They have to look beyond the horizon. So they should be given more opportunities, and venture into the new more horizon. benefits, more opportunities, so that they can work across and can actually, you know, do good with their future. Do well, but do good. So let me give some advice to the young budding Indians who are strong, who are vibrant, who are resilient, and who ready to capture the heart of the millions, who are dreamers and doers. They're both. And so I tell them to get a good education, as I talk to you about that, and also be the best you can be. And have knowingly, unknowingly, you're carving out your own journey. My journey was Frank Islam journey. Stephen Jobs' journey was a Stephen Jobs journey, and the job of Bill Gates was his journey. I also say do well, but do good. I also say help others to succeed when you are successful. I also tell them to make sure that make other people successful, because if they're successful, all of us will be successful, India will be successful, and the world will succeed. And I also tell them, create your own destiny and your own legacy. So those are the things that I have for the younger people. And you are the hope of tomorrow. I will say to the younger people,
be the best you can be. You have the capacity to change the landscape of India. Absolutely. So coming from your mouth, sir, it matters the most, you know, as a I ho- mentor, as a guide. Oh, it matters from you as As well. as an advisor, I would say, as you said, you know, not only education, in every walks of life, given an opportunity, we have to work better. So if we have a guide like you, of course, not only in India, I would say worldwide, we will leave our imprints. On that note, thank you so much for joining in, and all the very best for all your future endeavors. Keep visiting India, because India is beautiful. India is beautiful. India, we want India to become more beautiful. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि आप एजुकेशन सेक्टर में नहीं बल्कि बाकी सेक्टर्स में भी यंग माइंड्स की बात करें तो थिंक बियॉन्ड द होराइजन, सो दैट आप अगर बढ़ेंगे तो भारत बढ़ेगा. बहरहाल नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट एट इंटरनेशनल लेवल. बात हमने एजुकेशन की, बात हमने हेल्थ की. उसी के चलते अब आपको दिखा देते हैं आर्मी हॉस्पिटल के 100 साल होने पर. हमारी अगली रिपोर्ट. हंड्रेड years of existence of आर्मी हॉस्पिटल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री में हमारी हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है. और हम समझते हैं आर्मी हॉस्पिटल आज जो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स, अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, ये अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है. बहुत गर्व है हम सबको. ये अस्पताल हमारा फ्लैगशिप हॉस्पिटल है सारी कंट्री में. एंड ये चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रॉब्लम्स हों, सब इश्यूज सब यहाँ पर आते हैं. एंड हमें जैसे हमने बताया कि ये अस्पताल अब 32 सब स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ देख रहा है, संभाल रहा है. एंड इज़ कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न है, रिसर्च है. एंड हम we are second to none as we stand here today. जब इस लोकेशन पर धौला कुआं पर जब ये अस्पताल शिफ्ट हुआ, तब से लेके आज तक के सारे 12 भूतपूर्व जो कमान अधिकारी हैं उन सबको हमने निमंत्रित किया और उन्होंने बहुत खुशी खुशी हमारा निमंत्रण स्वीकार भी किया और वह सभी आज हमारे बीच मौजूद हैं. और हमें ये बहुत प्रसन्नता हुई उन सबको देख के. उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनका अस्पताल किस तरह से पला बड़ा है और आज किस मुकाम पे पहुंच गया है. हम सभी कुछ नेचुरल क्वालिटीज के साथ बॉर्न होते हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं वो छिप जाती है. व्हेन यू टॉक अबाउट लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग इन रियल सेंस? क्या है लर्निंग? क्या है एजुकेशन? क्या हम ठीक तरीके से इम्बाइब कर रहे हैं जो वैल्यूज, जो एजुकेशन हमें सीखनी चाहिए? इज देयर अ मीटर और अ पैरामीटर विच डिसाइड्स कि क्या जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर इट्स जस्ट क्रैमिंग एंड द मगिंग एंड लर्निंग फॉर दैट टाइम? सो लेट्स अबाउट लर्निंग अबाउट लाइफ. और भी बहुत बड़ा होराइजन है लर्निंग का, एजुकेशन का, सक्सेसफुल होने का. सो इन टॉक अबाउट क्रिएटर्स, इन्वेंटर्स एंड कम्युनिकेटर्स. क्या स्पेशलिटी आप में है? क्या आप सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं? और साथ साथ ये सेगमेंट उन पेरेंट्स के लिए भी है who doesn't want their child to run after marks and money but to be successful in life, real term में successful. बहरहाल आज हम बात करेंगे मॉडर्न टेक्निक्स इन एजुकेशन के बारे में, इंटरेस्टिंग टेक्निक्स और जॉयफुल टेक्निक्स कि आपका बच्चा बस मज़े करते करते बस पढ़ना भी सीख जाए. तो घर बैठे लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहें आप डायल कर सकते हैं हमारा ये नंबर 23097524. दैट्स 23097524. दिल्ली से बाहर या मोबाइल से कॉल करें तो दिल्ली का STD कोड 011011 ज़रूर लगाएं.
तो बहुत ही हमारा खास टॉपिक है। तो मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हमारे साथ जो स्टूडियो गेस्ट पर है। CEO हमारे साथ है परिसर आशा की मिस आरती सवूर। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन परिसर आशा की जब हम बात करते हैं, क्यों ना अपने दर्शकों को कुछ झलकियाँ दिखा दे आपकी इस संस्था पर, वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, परिसर आशा बहुत खूबसूरत नाम है, क्या है परिसर आशा आपके लिए? परिसर का मतलब जैसे अगर आपको पता है कि एनवायरनमेंट जो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट है, एंड आशा इज होप। तो आप सोचेंगे कि परिसर आशा और एजुकेशन का क्या ताल्लुक है। आप तो कहीं जाके सेव वाटर, सेव ट्रीज या सेव एनर्जी करनी चाहिए, बट फॉर अस परिसर मीन्स it's not just about your physical environment, but it's your social environment, it's your spiritual environment, it's your academic environment, it's your emotional environment also. क्योंकि एक मतलब एक छोटी सी मैं क्वेश्चन आपको पूछ लेती हूँ। बिल्कुल। आप घर पे कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी। हिंदी। अच्छा, आप हिंदी में क्यों बात करते हैं? आप गुजराती में क्यों नहीं बात करते? गुजराती में क्यों नहीं बात करते? क्योंकि सिंपल हमने सीखी ही नहीं। तो अब सीखी तो हमने अंग्रेजी भी है, हाँ, लेकिन हम प्रेफर्ड मतलब मिक्स लैंग्वेज, लेकिन हिंदी, क्योंकि एब्सोल्युटली। तो वो हिंदी आपकी मदर टंग है, राइट? रिफ्लेक्सेस हिंदी में एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये आपकी जो मदर टंग है, आपकी हाँ। जो मातृभाषा है हिंदी, आपको किसी ने जबरदस्ती पढ़ाई थी? नहीं, कोरा कागज था, जो लिख दिया वो हम जान गए। तो यानी ये जो सारी चीजें जो हमारे आसपास आपके एनवायरनमेंट में वो भाषा बोली गई, तभी अपने आप वो भाषा आपको आ गई। वो किसी ने आप पे जबरदस्ती नहीं करी थी। बिल्कुल नहीं। तो ऐसी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल हमारे ध्यान में भी नहीं आती, लेकिन हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। एंड हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में आज इतनी सारी निगेटिव चीज़ें चलती रहती है कि उसका कहीं ना कहीं पे सही इम्पैक्ट और गलत इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे होता रहता है। तो बस हम लोग, हमारी जो फिलॉसफी है, जो एजुकेशन की फिलॉसफी है, बस इसी पे काम करती है कि हमारा एक अप्रोच है टुवर्ड्स एजुकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ईजॉल। ईजॉल इज एनवायरमेंटल स्टडीज अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग। इसके माध्यम से हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए कि ना कि वो फोर्सफुली वो बच्चे कुछ सीखना चाहेंगे या सीख पाएंगे, बट इट बिकम्स वेरी वेरी नेचुरल फॉर देम, नेचुरल, वेरी ऑर्गेनिक। हम कह सकते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन हमने उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो क्यों ना हम कुछ ग्लिम्स कैच कर ले परिसर आशा के कि क्या काम करते हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और क्या क्या अचीवमेंट्स परिसर आशा ने किया, क्या क्या बदलाव उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी में लाए। आइए देखते हैं। These natural qualities. We have all experienced these qualities when we were young. But as we grow up, we forget our natural qualities. Rather, we are forced to forget. Can we dream of a learning system where our natural qualities are encouraged for future sustainability of the individual and also our planet? Parisar Asha is Gloria's dream to change the education system to provide joyful learning for a sustainable future through the environment for the environment. Gloria D'Souza, a school teacher, created revolution in the history of Indian education with her not-for-profit registered trust, Parisar Asha. Gloria was the first Ashoka Fellow and has been awarded with international recognition as a social entrepreneur. My sister Gloria, who was the founder, who went through many difficulties in setting up the roots of this place. She had difficulties, but they never deterred her from moving onward. She had a sustained determination to change things. Ecotech World School program is a wholesome program to empower schools to address the challenges of 21st century educational needs while maintaining the fundamentals and identity of the school intact through its unique pedagogy of ESOL, Environmental Studies Approach Towards Learning. This comprehensive program provides global curriculum suitable for state board and CBSE syllabus for nursery to standard 7.
detailed lesson plan guidelines, digital and traditional teaching aids, virtual classrooms, worksheets and workbooks, assessment and evaluations, teachers training to develop academic skills as well as soft skills, and parents orientation. In a nutshell, a complete support system to create tomorrow's successful, positive, global citizens. Parisar Asha continuously conducts innovative workshops for educators to keep them abreast with the latest kinds of educational techniques. ये जो काम कर रहे हैं, the way I've seen Parisar Asha grow over the last few years, जब से मैं जुड़ी हूँ, I find that's very encouraging. अगर आर्ट को यूज़ किया जाए as a form of education, so definitely it stays for a longer time with children. It will remain forever in their minds, and I think that is what Parisar Asha is doing, and it's such a beautiful thing that they are doing. I wish them all the very best in future, because this kind of work is very rare, and I hope it just goes all over the world. हर बच्चा स्टार बनने वाला है इंडिया का। उस तरह से जो परिसर आशा रास्ता दिखा रहा है, मेरे ख्याल से हर बच्चा आपसे प्यार करने लगा, ना कि डरेगा। आपके जैसे लोग और पार्टिसिपेट करें, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सुधारें, थोड़ा क्रिएटिव ही बनाएं, जैसी आपकी थिंकिंग है, तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि I am a parent today. Parisar Asha believes that school education must present our children with a gift that offers a creative beginning, the wonder of exploratory learning, the confidence in discovering one's strengths, the hope for a better future, overall, a way of life that is worth living. Today's children, the nation builders, the global citizens. Parisar Asha में कहा जाता है the right to the right education. So Aarati ji, I would like to know what is that right education, and are we on the wrong track? I won't say directly we are on the wrong track, but क्या होता है ना कि जिस तरह से इनफैक्ट जो अभी हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन का, वो सिस्टम कहीं पे ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए छोड़ा था कि जहाँ पे उनको they never wanted us to like actually create those global citizens or like sensitive citizens, but they wanted like workers, the laborers, तो आज भी हमारा जो rote learning system चलता रहता है, I'm sure आप भी उसी सिस्टम से पढ़ी बली है और इवन मैं भी उसी सिस्टम से गई हूँ। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स आते हैं जो जहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जाती है, बट उसके लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत होती है, और हमारी जो आम जनता है, जो 80% आम जनता है, दे कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो परिसर आशा का जो मेन एम है, इनफैक्ट जो हमारी फाउंडर डायरेक्टर जिसके बारे में अभी आपने वो फिल्म क्लिपिंग में देखा था कि शी हैड अ विजन 36 years ago, imagine like she was a teacher, just a normal teacher in school, but she was very unhappy teacher, क्योंकि उन्हें वो सिस्टम कभी भी रास नहीं आई, कभी भी पसंद नहीं आई कि जहाँ पे सिर्फ हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स मगिंग अप करते हैं, रोट मतलब वी आर जस्ट फॉलोइंग प्रैक्टिसिंग रोट लर्निंग, एग्जाम में जाते हैं हम लोग उगल देते हैं, वहाँ पे बाहर आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल। और आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज है लेकिन जॉब्स नहीं है, ना उनके पास कॉन्फिडेंस है कि वो खुद कुछ कर पाए। एंड इफ़ यू विल सी, इफ़ यू विल चेक द लाइक सक्सेसफुल पीपल टुडे, इनफैक्ट आपके जो पहले सेशन में जो लाइक आपने इंटरव्यू करा था, ऐसे अलग अलग लाइक फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर हम लोग उनका स्टडी करें तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि दे वर लाइक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, मतलब स्टैंडिंग ऑलवेज आउटसाइड द क्लासरूम, they were never in the classroom. That means कहीं ना कहीं there is a gap in our education system. Maybe like there are lot of factors to that, क्योंकि हमारे पास poverty है, हमारे पास population इतना ज़्यादा है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऑल्सो लाइक से समथिंग कि आज जिस तरह के इंसान आप हैं वो इस तरह के क्यों बने हैं, क्योंकि उस तरह के एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं आपके एनवायरनमेंट से। जैसे आपकी जो मातृभाषा, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, तो वही चीज़ हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो आज इंटरनेशनल स्कूलों में हो रहा है, बट जो हमारी 80% आम जनता है कि जो दे कांट अफोर्ड,
तो उसके लिए जब गवर्नमेंट इज सेइंग कि राइट टू एजुकेशन, कि हर एक बच्चे का वो हक है कि वो बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन हम लोग आज 21st सेंचुरी में ये बात करना चाहते हैं कि राइट टू राइट एजुकेशन, कि आप क्या पढ़ते हैं वो भी बहुत निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंसान बन पाओगे आज। तो उसकी वजह से हमारी जो सर्विसेज है, हम लोग उस तरह से हमारे जो अंडर प्रिविलेज स्कूल को वी आर ट्राइंग टू हेल्प। तो मतलब एजुकेशन कहे, एनवायरनमेंट कहे, सिस्टम कहे, मेथोडोलॉजी की बात करें, लेकिन ओवरऑल होता है माइंडसेट। यस, यू नो वेयर वी हैव बीन एवर सिंस चाइल्डहुड, व्हाट आर वी एक्सपोज्ड टू। करेंगे माइंडसेट पर भी बात। एक बार फिर से अपना फ़ोन नंबर दोहरा देती हूँ ताकि आप घर बैठे लोग जो चर्चा में जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविजन पर फ्लैश हो रहा है 23097524 23097524 is the number, so you can join us in the chat there at Good Evening India. So you know when you talk about the mindset, अब पेरेंट्स की भी बात करें, नहीं हमें एक अच्छा स्कूल चाहिए, द सो कॉल्ड इंटरनेशनल, द वर्ल्ड स्कूल्स, IB बोर्ड, या एयर कंडीशन फ्रॉम बसेस टू स्कूल्स टू द कैंपस एंड एवरीथिंग। तो जिस माइंडसेट से हम बड़े हुए हैं, सो यू हैव टू राइट स्ट्राइक हियर, यू नो। तो ये माइंडसेट बदलना कितना ज़रूरी है और कितना मुश्किल है? नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो इजीली बदल सकते हैं, लेकिन जो माइंडसेट की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इट इज़ कंडीशन फॉर सो मेनी ईयर्स, हम लोग उस तरह से हम लोग भी बड़े हैं और हमारे बच्चे भी आज उसी तरह से बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी इनफैक्ट हम लोग जब स्कूलों के साथ काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी सिस्टम है, वी कांट रीच आउट टू एवरी चाइल्ड, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्कूल के द्वारा, क्योंकि एक स्कूल को अगर आपने रीच आउट कर लिया तो ऑलमोस्ट 400-500 बच्चों का तो आप भविष्य बदल सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी प्रणाली है, हम लोग वी वर्क वेरी क्लोजली विद द स्कूल्स। वहाँ पे हम लोग टीचर्स को एजुकेट करते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों के लिए हमारे जो वर्कशीट्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो अलग अलग लेसन प्लान्स जो हम लोग टीचर के द्वारा करवाते हैं, क्योंकि व्हाट वी बिलीव, अगर हमारी जो पहले वाली गुरुकुल प्रणाली अगर आप देखेंगे, गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा होती थी और वो गुरु एक पेड़ के नीचे भी बैठ के बच्चों को वो शिक्षा दे सकते थे। आज हम लोग इंटरनेशनल स्कूल के नाम पे इतने पैसे लेके भी एयर कंडीशन क्लासरूम्स होके डिजिटलाइज्ड सारे everything, yeah, smart classes, but are we actually making children smart, you know? But yeah, they are becoming over smart, but unfortunately not in the right sense. तो ये सारे चीज़ें जब हम लोग करते रहते थे, तो we realize कि okay, we are taking care of the environment. हमारे जो schools है वो उनके जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, जो इमोशनल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम होना चाहिए, वो बराबर कर रहे हैं। लेकिन आज ये बच्चा सिर्फ 5 या 6 घंटे वो स्कूल में जाता है, बाकी का पूरा जो समय है वो उसके घर पे वो बिताता है, या फिर ट्यूशन क्लासेस जाता है, या फिर आस पड़ोस में जाता है। तो उसका जो इंटरेक्शन रहता है, जो इम्पैक्ट रहता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है स्कूल के अगर आप कंपेयर करें तो वी रियलाइज़ कि आज जो कुछ भी बच्चों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ है वो उनके फैमिली में है, वो उनके होम एनवायरनमेंट में है। तो उसके लिए वी स्टार्टेड विद दिस इनोवेटिव इनिशिएटिव, जहाँ पे वी स्टार्टेड विद दिस फ्री पेरेंटिंग हेल्पलाइन। क्योंकि आज हम लोग बच्चों को तो स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए देयर इज़ नो स्कूल, देयर इज़ लाइक नो ट्यूशन क्लासेस, और ना भी अगर होता तो भी कोई जाना नहीं चाहेगा वहाँ पे। तो जिस तरह से वो बड़े हुए हैं या जिस तरह से उनको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बस वही एक्सपीरियंसेस हम लोग बच्चों को पास ऑन करते रहते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये लाइक वी स्टार्टेड विद दिस इनिशिएटिव, जहाँ पे हम लोग फ्री पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं, और हमारी फ्री पेरेंटिंग हेल्पलाइन है, जहाँ पे हमारे साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। क्योंकि आज जिस तरह से बच्चों को बड़ा किया जा रहा है, आइदर दे आर अंडर स्ट्रेस और दे आर इनटू टू मच ऑफ लव, कि हाँ जो मुझे नहीं मिला, हाँ या जो मुझे नहीं मिला आज मैं मेरे बच्चों को देना चाहता हूँ। So that means mindset बदलना है, yes, environment बदलना है, yes, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं अगर देखें, it's not an overnight change. It's absolutely not. Not even in, I would say in couple of days, months, years it would take to actually change. क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि लेसन प्लान्स की बात करें, टीचर ट्रेनिंग की बात करें, साथ ही if I'm not wrong, our bags, those heavy bulky bags जो बच्चे लेकर जाते हैं, climbing all the way to 3rd floor, 4th floor and carrying all those bags on those petty shoulders, I would say. So I think the entire strategy what we are working on is so wrong. No, absolutely. क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे समाज का जो एक्सपेक्टेशन रहता है, मतलब क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं वो कल के सिटीजन्स हैं, तो जो आस पड़ोस में, जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, कि मेरे पड़ोस के घर पे जो होता है वो इमीडिएटली मेरे
कंपटीशन में आ जाता है कि हाँ, तो ये जो कंपटीशन है अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वेरी हेल्दी कंपटीशन टुडे, यू नो, लाइक कंपटीशन के नाम पे कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ों का इतना इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे हो रहा है कि आज अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी निगेटिविटी या जो कुछ भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उस तरह के से यू नो लाइक एक्सपीरियंसेस उनके चाइल्डहुड में मिले हुए हैं। हाउ द स्कूल्स आर रिएक्टिंग टू दिस बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग ऑन ABC ट्रैक फॉर सो मेनी इयर्स, they have their own mission, they have their own strategies, but Parisar Asha की बात करें, आपकी philosophy की बात करें, are you being accepted well by the school systems as well? See, आज 36 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, we are not only sustaining but we are really growing. You know, like growing, we are doing well. In fact, we are invited by you people to you know on a national channel. I think somewhere everybody wants that change, but they don't know how to change. So that's where Parisar Asha is actually helping, you know, schools, because we believe catch them young. जब भी बड़े हो जाते हैं तो माइंडसेट बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो राइट एज पे अगर हम लोग राइट संस्कार, क्योंकि परिसर आशा ऑलवेज प्रीचेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। आज नॉलेज आपको गूगल कुछ भी उगल, यू नो लाइक यू गेट नॉलेज एट योर फिंगर टिप्स। आई लव्ड इट, गूगल कुछ भी उगल। या बट एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारे लेसन प्लान्स हम लोग टीचर्स को लिख के देते हैं, इट डजंट मीन कि टीचर इज नॉट क्रिएटिव, बट टीचर इज ऑल्सो बॉक्ड डाउन विद सो मेनी इश्यूज एंड सो मेनी थिंग्स। एंड दूसरा it's a study what we have done survey with teachers and we realized कि आज बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, मतलब मैं बोलती हूँ 80% टीचर्स है, दे आर नॉट हियर बिकॉज ऑफ पैशन, दे आर हियर बिकॉज दे कुड नॉट यू नो लाइक फाइंड एनीथिंग एल्स टू डू इन द यू नो लाइक इन द रियल लाइफ। सो वेरी फ्यू teachers are today they are passionate because आज कोई भी घर का बच्चा they don't want to take you know like teaching as profession, everybody wants to earn money today. Everybody aspires to really do well in their life, and teaching is such a profession unfortunately in India जहाँ पे पैसे भी आपको मतलब सही ढंग से नहीं मिलते unless and until you are in some good school. I think more or less a noble cause की अगर हम बात करें to helping the society, at the same time the environment, and I would say building the future leaders, the innovators and the creators. और आपकी इसी philosophy की वजह से आपको काफी बार सम्मानित भी परिसर आशा को किया गया है। There's so many acknowledgements and awards and your organization has been given. Yeah, because we believe that every day we have to keep on innovating and that's the key to success, right? क्योंकि अदरवाइज सबके पास डिग्रीज रहते हैं, लेकिन कौन सक्सेसफुल होता है कि हु कैन थिंक डिफरेंटली। सो जो 21st सेंचुरी के जो हम लोग लाइफ स्किल्स बोलते हैं, तो हमारे जो सिस्टम के द्वारा वी आर ट्राइंग टू गिव दैट 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स टू आवर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज उसके साथ में स्किल्स, बिकॉज आज गवर्नमेंट भी बात कर रहा है स्किल्ड इंडिया की, तो यहाँ पे राइट एज पे अगर हम लोग वो राइट स्किल्स बच्चों में इंट्रोड्यूस कर दे, and at the same time we are also talking about attitude and value building, which is very very crucial today. कि आज मतलब maybe you will be a successful person in life, but आपको पता नहीं, मतलब professionally you are very successful but your personal life is gone for a toss. Today people are not even able to talk to each other, they are maybe glued, you know like they are virtually connected with everyone, but personally face to face आएंगे साथ में तो पता नहीं उनको क्या बातें करना है, उनको पता नहीं रहती है। तो these are different aspects and these are different loopholes in our system of education जहाँ पे we are working. And I think at the right time अगर इन loopholes पे काम कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है हम नहीं आगे आने वाली generations इसका benefit ले सकती है। हमारे साथ फोन लाइन पर कॉलर जुड़ गए हैं मुंबई से, डॉक्टर हर्षा, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो मैडम, डॉक्टर सायनी फ्रॉम अंधेरी मुंबई। जी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, अपना सवाल कीजिए। हाँ, ये पूछना है मुझे कि अपना 4th स्टैंडर्ड तक के, प्राइमरी तक के बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना चाहिए या नहीं? यस, आई थिंक अगर आप मुझे पूछे पर्सनली तो मदर टंग में पढ़वाएंगे तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो लाइफ टाइम के लिए बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम परिसर आशा के माध्यम से इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के साथ भी काम करते हैं और वर्नाकुलर मीडियम स्कूल्स के साथ भी काम करते हैं। और आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का इतना बड़ा मतलब फैलाव हो गया है कि आज हमारे जो मेड सर्वेंट्स है जो घर पे बिल्कुल भी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते, वो आज बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनके घर के एनवायरनमेंट में बिल्कुल वो भाषा बोली नहीं जाती। तो वो बच्चों के इतने इश्यूज होते हैं और उनको ट्यूशन क्लासेस में फिर भेजा जाता है। ये मतलब पेरेंट्स दे कांट अफोर्ड बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू सेंड देयर चाइल्ड यू नो इन अ ट्यूशन क्लास,
जहाँ पे नर्सरी से, इनफैक्ट यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि हमें फ़ोन कॉल आया, मतलब, और मैंने उठाया था फ़ोन, जो हमारे जो हेल्पलाइन है, जो पेरेंटिंग हेल्पलाइन, तो वो जो मदर थी बहुत पैनिक थी। वो बोल रही थी, मैडम मेरा बच्चा ना पढ़ता ही नहीं है। एंड मुझे लगा कि 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में कल को एग्ज़ाम देनी होगी, उसको बोर्ड की एग्ज़ाम है और लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। बोलते बिल्कुल लिखने को तैयार नहीं है। तो मैंने पूछा कौन से स्टैंडर्ड में जाता है वो, तो बोलते सीनियर केजी। बोले सीनियर केजी में लिखता नहीं है? नहीं, जूनियर में तो इतना लिखता था वो। तो ये प्रॉब्लम जो होता है कि जो ट्यूशन क्लासेस में वो क्या कराते हैं, तो एज अ पेरेंट आपको वो भी देखना है कि भले आप, मैं नहीं बोल सकती कि क्योंकि वो पेरेंट्स शायद स्कूल में नहीं पढ़े, अंग्रेजी नहीं आती उनको, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर डाल देते हैं हम, जैसे आपने कहा शी वाज वेरी पैनिक व्हाइल शी कॉल्ड यू, तो जो प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड आप जो उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि राइट एट दैट वो ग्रासरूट लेवल छोटे बच्चे, तभी आपको लगता है वो पढ़ नहीं पा रहे। और उनका मतलब माइंडसेट जो है पेरेंट्स का कि जितना भी आप बुक में भरो, लिखोगे यानी यू आर लाइक पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में कुछ ना कुछ हो रहा है, नहीं तो स्कूल तो कुछ करता ही नहीं है। दिस इज द लाइक फीडबैक व्हाट वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब बहुत ही नोबल कॉज है, बहुत ही अलग दिशा में चल रहे हैं, और ये दिशा हम सबसे कनेक्टेड है, नॉट ओनली आई वुड से चिल्ड्रन बट एडल्ट्स, सीनियर्स, द पेरेंट्स एज वेल। सो आई वुड सजेस्ट कि लाइक प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन देयर मदर टंग, but I don't know how many parents will follow that advice. Accept it. They would say कि नहीं, अगर हम initially infuse कर देंगे तो they would grasp quickly. और आपकी बहुत खूबसूरत, एक बहुत अच्छी टीम भी होगी, आई वुड से बहुत ही इंफॉर्मेटिव, हाईली। तो क्यों ना ये जान लेते हैं परिसर आशा के कार्यकर्ता का क्या कहना है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। The workshop which was conducted by Parisar Asha has helped we teachers to do something more, to enact. We got an opportunity to discover ourselves again. Basically all the schools are emphasizes on the academic part, but here the Parisar Asha is focusing on academic part as well as the activity also. The other day we had a session on teaching aids. Everything was to be made from simple things which are available in the, without spending any kind of money. Start the music. 1, 2, 3, go! Under this, we have conducted liberal art sessions, and I'll tell you, it was a wonderful experience. Liberal art means it's a totally personality development session which we have conducted here, and children got a very nice experience. They were liberal in doing art and craft activities. They got the complete liberty in dance, making songs, scripting, drawing, coloring, playing games, concentration games also we have conducted, and they were enjoying it so much. यहाँ का स्कूल पूरे 92 से शुरू है मराठी मीडियम का। अभी तक मराठी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ 2014 में, तो इसलिए मैंने परिसर आशा का प्रोग्राम यहाँ पे चालू किया है। उनसे इतने फ़ायदा बच्चों को हुआ है, पेरेंट्स को हुआ है कि मतलब मराठी मीडियम के बच्चे जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उनको खाली पढ़ना नहीं है, तो कुछ एक्टिविटीज़ होना चाहिए। इससे हमें परिसर आशा के लोग बहुत सारे कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आते हैं, इतने मदद करते हैं कि हमें जो पेरेंट्स लोग का सपोर्ट है बढ़ता जा रहा है। Our school believes that the school is an extension of every home. So by following Parisar Asha's approach, we are actually actualizing the school's mission. So we find that the teaching and learning not only happens in an interesting manner in school, but it also happens at home, because parents also pick up these methods of teaching in order to work with their children at home. So it is spreading, and the child really becomes the center of adult collaboration, which is how Gloria described Parisar Asha's work. She said, always the child is the most important person. All of us are collaborating. So many times in schools you find that parents and teachers work as two teams, opposite teams. But this method helps parents and teachers to work as one team.
And those smiling faces, I would say, not only refresh us, of course you sitting there back at your homes. एक फोन लाइन पर हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, श्री चंदन कुमार जी हमारे साथ है बिहार से। चंदन जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से सवाल कीजिए। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा मैम से सवाल है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए या प्राइवेट स्कूल में? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक्चुअली सरकारी स्कूलों में कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि सरकारी स्कूलों में इतने सारे एनजीओज, जैसे हमारे जैसे एनजीओज हैं, वो जुड़े हुए हैं कि आज प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा मैं बोलती हूँ दे आर प्रिविलेज स्कूल्स जो सरकारी स्कूल है। तो बिल्कुल भी आप झिझक मत कीजिए। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूलों में बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि पैसे बहुत लगते हैं और पेरेंट्स सिर्फ सरकारी स्कूलों में नहीं डालना है, मुझे प्राइवेट स्कूलों में डालना है, ऐसे करके बहुत मतलब मेहनत ज़्यादा करते हैं, पैसे डालते हैं वहाँ पे, फिर ट्यूशन क्लासेस में डालते हैं। बट ये सब चीज़ें अगर पेरेंट्स उनका माइंडसेट नहीं बदलेंगे, आज सरकारी स्कूलों से पढ़ के कितने बड़े बड़े लोग कौन से बड़े बड़े पोजीशंस पे है। सो डेफिनेटली इट इज़ नथिंग वेयर डू यू स्टडी और इन अंडर व्हाट कंडीशंस यू स्टडी। ये बिल्कुल आपके बच्चे पे और आप लोगों पे और आपके टीचर्स पे निर्भर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मायने नहीं है एजुकेशन में। बिल्कुल। और अभी हमने जैसे सुना, स्कूल इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ होम। यस। क्या माहौल आपके घर पर है, किस तरीके का माहौल आपके पीयर ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, कजन्स, तो क्या लगता है 36 years and still growing, challenges बहुत सामने आते होंगे as far as the acceptance is concerned, methodology is concerned? See, of course challenges तो आते हैं and I think without challenges life के कोई मायने नहीं है। You need some aspiration, right? कि कुछ ना कुछ आ जाए, कुछ चैलेंजिंग आ जाए तो तभी। और इनफैक्ट ये मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि ये जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, चैलेंजेस बहुत रहते हैं, तो वो जो जज्बा उन लोगों में रहता है, और वही आप दूसरे जगह पे देखिए जहाँ पे सब एवरीथिंग दे गेट ऑन देयर प्लेटर, तो वो जज्बे की कमी रहती है। तो चैलेंजेस की वजह से आज परिसर आशा 36 सालों तक यहाँ पे आके पहुँची है और भी मतलब जाएगी। पहुँचे बिकॉज एक वी वुड से एक डिटर्मिन्ड टीम है आपकी, एब्सोल्युटली एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है। एंड टॉकिंग अबाउट यू हैव बीन एक्चुअली टेकिंग केयर लाइक अ मदर, सो आई वुड से यू एज अ मदर, as a Kathak dancer, as an artist or as a CEO of Parisar Asha, सारे roles को मैं ये नहीं कहूँगी which is better than the other, because undoubtedly mother would be connected with CEO and आप किस तरीके से connected करके how do you manage it? Actually ये पहले बार किसी ने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो आई एम सो यूज्ड टू गिविंग आंसर्स अबाउट परिसर आशा क्योंकि यहाँ जो मैं जज्बे की बात कर रही थी, क्योंकि आई फील अगर आप जिंदा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है। और हम लोग इसी टाइम पे कंपैशन की भी बात करते हैं कि हर एक बच्चे में वो जज्बा होना चाहिए किसी और के लिए कुछ करने का। तो वही जज्बा लकीली मतलब मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरा जो एनवायरनमेंट था घर का, इसके लिए मैं बहुत जोर देती हूँ घर के एनवायरनमेंट पे, कि जिस तरह से, क्योंकि क्या है ना, आप कुछ भी बच्चों को सिखाते हैं या रट्टा लगाते हैं, वो रट्टा सिर्फ उसी दौर के लिए रहता है, वो लाइफ टाइम आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको एज अ पेरेंट जब भी आप देखते हैं तो बच्चे जो कुछ भी आपसे सीखते हैं वो पेरेंट को देख के सीखते हैं। बिकॉज सी एजुकेशन की जो प्रोसेस है, जो लर्निंग की प्रोसेस है, इट इज़ ओनली ऑन, जिसको बोलते हैं हम लोग अनुकरण। बिल्कुल, वी इमिटेट, तो मतलब जो देखेंगे वही सीखेंगे, तो वही माहौल बनाएं। ऑन दैट नोट, थैंक यू आरती जी, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। परिसर आशा को हम सबकी ओर से ढेर शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मतलब बिल्कुल ना केवल बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी है। आप जिस तरीके से माहौल बनाएंगे, जो बच्चों में आप वैल्यूज इनकलकेट करेंगे, वही हमारे बच्चे सीखेंगे। सो थिंक बिफोर यू प्रीच एंड बी योर ओन सेल्फ लर्नर, क्योंकि हम कहेंगे हम किसको ब्लेम करेंगे, इट्स अबाउट यू योरसेल्फ। आज के अंक में इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।